हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से डब्ल्यूटी गैन स्विंग चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट को समझा जाता है। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लिए हैं एंड वी आर यूजिंग द गैन स्विंग चार्ट मेथड बाय यूजिंग द स्विंग चार्ट इंडिकेटर। तो बेसिकली 20 सितंबर को अगर आप देखेंगे, 20 सितंबर मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोज दिया। यहाँ पर गैप डाउन से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। जब मोमेंट मार्केट क्लोज बिलो इट इन द 15 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम, मार्केट ने यहाँ पर इनसाइड बार क्रिएट किया एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इनसाइड बार मेथड हम लोग अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो अगर आपको याद हो, हमने इक्विनॉक्टियल पॉइंट को क्रिएट किया था 23 ऑफ सितंबर को। मार्केट अभी तक अगर मैं देखूं 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, दिस इज द 23 ऑफ सितंबर, यानी कि 23 अवेलेबल नहीं था तो हमने 22 को लिया था। एंड अकॉर्डिंग टू द इक्विनॉक्टियल पॉइंट हम लोग अगर देखें तो मार्केट वाज क्रिएटिंग द बियरिश प्रेशर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर level. Okay, so how much we could fall from this particular direction? So if I calculate the basic fall, basic correction, that could be the 5%. Now we are at a point, हमारा जो अभी की मार्केट सिचुएशन है, the market is preparing for a correction. ओवरऑल मार्केट करेक्शन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। स्मॉल कैप्स अराउंड मिड कैप्स करेक्शन में आने वाले हैं एंड द लार्ज कैप स्टॉक्स जो है वो अभी साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम पे जाने की तैयारी करेगा। इट इज द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन द मार्केट। तो अगर अब हम लोग कोई भी एक लार्ज कैप स्टॉक को पिक कर ले, जैसे कि द लार्जेस्ट ऑफ द लार्ज कैप वी कैन ड्रॉ HDFC बैंक। ठीक है, if you draw the HDFC Bank here, I just remove the drawings. What you can see, HDFC fall earlier from the 90 period, the swing chart. तो इसके पहले मार्केट ने ऑलरेडी करेक्शन कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिनारियो। अभी मार्केट जो है वो थोड़े करेक्शन से बाहर आ रहे हैं। So how you can calculate this particular scenario? Calculate the particular scenario is very easy. आपको देखना होगा मार्केट कहाँ से करेक्शन स्टार्ट किए थे। From this particular direction मार्केट ने बॉटम बनाए थे और यहाँ से मार्केट ने करेक्शन को स्टार्ट किया था। So if you currently see, we are at very near of the 0.5 level. In the HDFC Bank, we are very near of the 0.5 level, which is a balancing point in the according to the WT CAN. So now does it mean कि मार्केट यहाँ से नहीं गिर सकता? डेफिनेटली यहाँ से गिर सकता है, बट आई थिंक जो हाईएस्ट लो यहाँ पर बन सकते हैं, दैट कुड बी अराउंड 4 to 5% फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, दैट कुड बी एट 0.618 फिबोनाची लेवल। तो इस पूरे जो हमने एनालिसिस किया यहाँ पर, ये जो गैन स्विंग चार्ट का कॉम्बिनेशन है वो कैसे काम आए हैं हमारे। अकॉर्डिंग टू द गैन स्विंग चार्ट, मार्केट क्लोज अबव द लेवल। जिस पॉइंट पे मार्केट ने क्लोज किया, यू कैन सी द प्राइस एंड द मूविंग एवरेज क्रिएटिंग द डाइवर्जेंस पैटर्न, राइट? प्राइस एंड मूविंग एवरेज क्रिएट द डाइवर्जेंस, सो वी विल नॉट टेक दिस इजीली. Now here the price and moving average created divergence, but again price और moving average जो था वो सेम डायरेक्शन पे, सेम एंगल पे चलने लगे। तो यहाँ से हमारा बाइंग स्टार्ट हुआ। Again from this particular direction, price coming down, but the moving average or the Gann swing chart, whatever you can call it, creating the divergence and price gone on the upward side. What is the divergence? The price is coming down, moving average is on the upside. The same thing could happen someday around this particular direction, क्योंकि यहाँ पर भी आलिया डाइवर्जेंस थे, यहाँ पर भी आलिया डाइवर्जेंस तो ऑलरेडी मार्केट ने एक डाइवर्जेंस को तोड़ दिया है।
एक डाइवर्जेंस को मार्केट ने ऑलरेडी तोड़ दिए हैं यहाँ पर. somehow around this level I am expecting to market create some bottom. ये मैंने मैक्सिमम लेवल को ड्रॉ किए हैं. ओवरऑल अगर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो दिस कुड बी up to 0.618 level, so which is around here. Now in the Gann level, in the Gann learning, you will always find the thing called the multiple time frame. तो हम लोग यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम की अगर बात करें, सो आई एम गोइंग टू यूज द मंथली चार्ट. तो मंथली चार्ट के हिसाब से द प्राइस इज नॉट नियर ऑफ द दिस स्विंग चार्ट लेवल, जो कि कोई काम में फिलहाल नहीं आएगा. तो आई विल यूज द 1 week of the time frame. Now what you can see now, in the 1 week of the time frame event, HDFC Bank did not cross this particular level. तो यहाँ तक we can easily expect वही सेम 4.8% का ही एक गैप दिख रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर अगर आते हैं मार्केट, डोंट वरी, find a super bullish formation in the HDFC Bank and you just need to go with the flow, because the HDFC का जो फंडामेंटल आर गुड. क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल्स पे आते हैं, इफ यू सी द quarterly, you see the annually, you will able to see the EPS are growing, the earning per shares are growing, and over this period the markets are performing well, but it is still a undervalued stock. Okay, if you just was to see the HDFC Bank based on the sector wise. Okay, तो definitely यहाँ पर potential है अभी. And further there was a small gap. So gaps are always indicate that price could fill the gap multiple times. And if you see, this is the gap fill on the upward side once, then twice, then thrice. तो I think ये gap का भी validity नहीं है, फिलहाल इसको नहीं लेते हम लोग. But what I personally feel कि मार्केट का अगर बॉटम बन सकता है तो यहाँ पर भी बन सकते हैं स्टॉक वाइज, क्योंकि ऑलरेडी इट्स एट द 1.272 लेवल, बट वी नीड टू जस्ट वेट एंड वॉच विद द वीकली क्लोजिंग. एंड नेक्स्ट 1468 could be the good price to enter into the stock. Again, you have to always find the potential buy level. Like अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इस पॉइंट पर मार्केट ने कौन से पैटर्न क्रिएट किए हैं. इट्स क्रिएट द ड्रैगन फ्लाई दोजी. ओके, तो ड्रैगन फ्लाई दोजी बनाने के बाद इनसाइड बार बना के ऊपर की तरफ ब्रेक. सो ऑन द ड्रैगन फ्लाई दोजी वी कैन एंटर एट द फर्स्ट टाइम, देन सेकंड लॉट हम लोग एंटर कर सकते हैं ऊपर की तरफ. तो वहां से मार्केट कितने परसेंटेज तक का मूव दिए हैं, गिव अराउंड 17% ऑफ द मूवमेंट. Okay, in the large cap share, 17% is the big money. Okay. Now, next, look at the Infosys. What is the Infosys look like? अगर हम यहाँ पर देखते हैं, Infosys is somehow already create the bottom. तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है. अभी मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किए इनसाइड मदर कैंडल को रेजिस्टेंस. सो यू कैन कंसिडर दिस एज अ गुड बुलिश स्टॉक फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. एंड मार्केट कुड रिविजिट द लेवल, एंड फ्रॉम बाय रिविजिटिंग द लेवल इट कैन अगेन बाउंस आउट. If you see the 1 day of the time frame over here, in the 1 day also the market is still above the swing chart. So overall अगर मैं देखूं तो market is in the
मतलब यहाँ पर बहुत ऐसे बन रहे हैं कि ये अभी करेक्शन पे जाएगा, ये अभी करेक्शन पे जाएगा, शायद मार्केट करेक्शन पे जाए, बट ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा. बेसिक सा 5 to 10% ऑफ द करेक्शन इज वेरी हेल्दी, एंड यू कैन buy the quality shares at those particular levels. Even this is the Gann swing chart. It also work in the intraday time frame. And यहाँ पर आपसे शेयर करता हूँ intraday के कुछ levels. Back Nifty index future. Okay, sir. तो Gift Nifty open हो गया. Back Nifty index future. We will see the 5 minute of the time frame. So how you could see how much fantastic it could work if you properly use it. Here, market formed a bearish engulfing while the price is coming down. Okay. यहाँ पर bearish engulfing बना, price नीचे की तरफ आ रहे हैं. There is no divergence. So, once market break below it and revisit and create the doji kind of dragonfly doji pattern, तो वहां से आपका शॉर्ट बनते हैं. ये आज का ही ट्रेड है, and you can see you are getting the good. Same, you could earlier check this particular levels, and here the 44,674 से लेकर ऊपर की तरफ लोअर एंड पर नहीं आए मार्केट, क्योंकि डाइवर्जेंस बन रहा था. So overall, this is a fantastic trading system if you could use it properly, even in the 1 minute of the time frame. You could easily use it if you know the basic of price action. Also, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है ना कि मैंने बाय किए, कुछ सिग्नल्स दिख रहे थे, बट व्हेन आई बॉट वो प्राइस नीचे की तरफ. तो यू कैन सी हियर प्राइस ने मूविंग एवरेज ने डाइवर्जेंस क्रिएट करता रहा प्राइस के साथ साथ, बार बार डाइवर्जेंस बन रहा है, अपसाइड में प्राइस जा रहे हैं, नीचे ट्रेड बनता ही नहीं. So this is one of my Gann swing chart method I just shared with you. So that's it as of now from my end today, and we'll get back to you in my next video. Bye.